आपने कई बार ये डिबेट सुनी होगी कि फ्री वेट्स आर बेटर देन मशीन्स फॉर मसल बिल्डिंग या फिर मशीन्स आर बेटर देन फ्री वेट्स फॉर बिल्डिंग मसल. द चॉइस बिटवीन फ्री वेट्स और मशीन्स इज heavily debated by coaches, athletes and recreational lifters. If the person who introduced you to lifting has a background in strength sports or he's a true gym bro, then he may have told you that barbells are the best or the only way to build muscle. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली सच क्या है, रिसर्च क्या कहती है एंड व्हाट्स एक्चुअली द बेस्ट वे टू गेन मसल मास. और जाते जाते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, फ्री वेट्स या मशीन्स. तो ये वीडियो एंड तक देखना. सबसे पहले ये पता करते हैं कि फ्री वेट्स एंड मशीन्स होते क्या हैं. फ्री वेट्स का मतलब ऐसे वेट्स दैट यू कैन कैरी अराउंड एंड ट्रेन विथ. इसमें आते हैं आपके डम्बल्स, आपके बार्बल्स, प्लेट्स, केटलबेल्स एक्सेट्रा. मशीन वेट्स का मतलब है जो इक्विपमेंट आपके बॉडी को फोर्स करते हैं टू मूव अलोंग अ सर्टेन फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन, जैसे लेग प्रेस मशीन, चेस्ट प्रेस मशीन या केबल मशीन. अब बात करते हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की. अब फ्री वेट के बारे में अगर हम बात करें तो वाइल यूजिंग फ्री वेट्स आपको वो फ्री वेट्स बैलेंस करना पड़ता है, which forces your body to use additional muscles called stabilizing muscles. And ये muscles train होते हैं तो आपकी overall body stability and balance भी improve होती है. And most gyms have free weights. एक दो machines कम हो सकती है but free weights हमेशा रहेंगी. And free weights के साथ आप almost every exercise perform कर सकते हैं because they are versatile. अब अगर हम machines की बात करें तो they are safer to use as they reduce the risk of performing an exercise incorrectly and guide the user through the correct range of motion. They can also help you target and isolate specific muscle groups and you can do it without anyone's supervision. अब अगर cons की बात करें तो free weights can be more risky क्योंकि free weights यूज़ करते टाइम injury के risk ज़्यादा high होते हैं because it can be harder to control the weight and the risk of performing the exercise incorrectly is also high. And coming to machines, they don't improve your stability and functionality as they restrict you to one movement path. Plus machines require a lot of maintenance and अगर आपकी gym अपने machine सही से maintain नहीं करती है तो this can be an hindrance to your workout. Now let's dive deeper into free weights and how it really helps with hypertrophy, that is building muscle mass. Free weights allow the body to move freely in multiple planes of motion. एंड फ्री वेट्स यूज़ करते टाइम आपको वेट कंट्रोल भी करना पड़ेगा थ्रू आउट द होल एक्सरसाइज, जिससे सिर्फ आपकी प्राइमरी मसल्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव ही नहीं होगी बट देयर इज़ ऑल्सो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ मसल ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर, क्लोजली रेप्लिकेटिंग रियल लाइफ एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट्स. बट हाँ, इसकी लिमिटेशंस भी है अपार्ट फ्रॉम जस्ट हाई रिस्क ऑफ इंजरी. हर एक्सरसाइज करने की सही टेक्निक सीखना एंड ओवरऑल बॉडी मैकेनिक्स समझने की ज़रूरत है एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी मैकेनिक्स ज़रूरी है. दिस स्टीप लर्निंग कर्व कैन बी क्वाइट डीमोटिवेटिंग फॉर बिगिनर्स एंड कैन लीड टू इम्प्रॉपर ट्रेनिंग और इंजरीज इफ नॉट एड्रेस्ड. Exercises with free weights require a higher degree of coordination and body awareness to engage the correct muscles and maintain balance. And जिन लोगों को already physical limitations है उनके लिए फ्री वेट्स में नॉट बी आइडियल. अब बात करते हैं मशीन्स एंड हाइपरट्रोफी के बारे में. मशीन्स आर इंजीनियर्ड टू टारगेट स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स विदाउट टू मच इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम अदर मसल्स. दिस आइसोलेशन इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स who are looking to focus on strengthening or building a particular muscle group or building muscle in a particular area without the compensatory involvement of other dominant groups. The fixed path of movement that machines offer ensures that the exercise targets only the intended muscle groups. ये especially helpful है जब हम injuries से recover कर रहे हो और if we're trying to correct imbalances in muscle strength or size. साथ में machines also often offer built-in support for the back, chest or shoulders, ensuring proper posture and alignment while performing the exercise. अब limitations की बात करें तो machines guide users through very specific movements which can limit the development of functional strength. And functional strength is very important for performing daily activities
and movements that involve multiple muscle groups and joints working in coordination. Because machines already provide support and stability, there's less engagement of the stabilizing muscles and the core. These muscles play a crucial role in balance, posture and injury prevention in daily life. So undertraining of these muscles can be quite risky. And एक और चीज़, most machines are designed with a general user in mind and may not accommodate all body types or sizes effectively. This can lead to awkward form or improper positioning during an exercise, which can cause discomfort and even lead to injuries over time. अब बात करते हैं दोनों के बारे में, which would be best for you according to your lifting experience. अब जो लोग पहली बार स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हैं, उनके लिए machines offer a controlled environment to learn the basics of strength training without the need of advanced coordination or strength. The guided motions ensure correct form and reduce the risk of injury. But ध्यान रखें कि आप पहले सही form and machines को use करने का सही तरीका पहले सीख लें. This is why free weights can be more challenging for beginners to use because it requires good form, balance and coordination right from the very beginning. And जो लोग already advanced lifters हैं, उनके लिए free weights offer the best means to continue pushing the envelope in terms of strength, hypertrophy and functional performance. The need for stabilization and coordination with free weights maximizes muscle recruitment and simulates real-world or athletic performance more closely. Advanced lifters may use machines more selectively, focusing on refining specific muscle groups or working past plateaus in muscle size and strength. Machines can also be useful for advanced pre-exhaustion strategies before moving on to heavier lifts using free weights. Now let's talk about it in terms of specific goals. When it comes to hypertrophy, machines are better when you're trying to target specific smaller muscle groups in isolation. However, if you're targeting large muscle groups like chest, back, glutes, quads, etc., then using free weights is a better idea because they engage more muscle fibers per exercise because of the stabilization and coordination required to perform that exercise. When it comes to muscle strength, generally लोग free weights prefer करते हैं. Exercises like squat, bench and deadlift are foundational strength building movements that engage multiple muscle groups, including core stabilizers, leading to greater overall strength gains. And lastly, when it comes to injury recovery and rehabilitation, machines are often the preferred choice. They can safely isolate muscles or muscle groups, allowing for controlled strengthening of injured areas without placing undue stress on the other parts of the body. अब अगर हम बात करें scientific evidence के बारे में, तो research indicates that using free weights not only targets the primary muscle groups but also the supporting stabilizing muscles. अब बात करते हैं कि अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ये कैसे यूज़ करना चाहिए. A number of studies advocate using a combination of free weights and machines in a training program, highlighting that each has its own unique benefits that can complement the other. Incorporating both types of equipment can provide a comprehensive approach to muscle development, allowing for both the targeted strengthening of specific muscle groups and the development of overall muscular balance and functional strength. एक बात ध्यान रखें कि कोई भी नई ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ज़रूर किसी फिटनेस प्रोफेशनल से कंसल्ट करें. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द जिम, always perform exercises under the guidance of a flow trainer or a personal trainer. So now comes the conclusion, which is better. अगर आपने अभी जिम ज्वाइन किया है तो a better idea would be to start with machines first to build confidence and understanding on how to perform an exercise correctly and in a safe manner. But side by side, practice using free weights. Use light weights and focus on getting the form right first. Once you have a good understanding of most exercises, you can work towards incorporating both in your training routine, using free weights to hit those much needed compound movements, and then using machines to target specific smaller muscle groups. तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही guys. Hope you learned something new from this video. आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे. So if you like this video, like this video.
And if you loved this video, then subscribe to the channel. That's it. See you next time.